Good morning, children. On previous turn, we had seen that what are organ systems and how many organ systems are present in human body. Today, we are going to study the first organ system of human body, that is the respiratory system. The main parts of the respiratory system or breathing system are, what is respiratory system, students? Respiratory system is a breathing system, means through this system we breathe in and breathe out. हम सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं. So respiratory system is made up of some parts like nose, windpipe and lungs. The respiratory system helps us to breathe. The respiratory system helps us to breathe means with the help of this system we are able to breathe the air, breathe in and breathe out. सांस हम लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं. And it is made up of mainly three parts: nose, windpipe and lungs. So students, you can see in this picture, this is the nose continues to and join to windpipe, and this windpipe is attached to the two lungs, right? Okay, so what we do when we breathe, then air enters our body through nose and then it goes to the lungs through windpipe. Means whenever we breathe in means सांस लेना and breathe out means सांस बाहर निकालना. So whenever we breathe in, the air comes through this nose and go in windpipe, and through windpipe it goes in lungs, right? So this air is called, the air which we breathe in is called inhaled air, and this air is rich in oxygen, because students, you know that we need oxygen. So how this oxygen we take this oxygen through the air. So whenever we take air, we breathe in air, so this air is rich in oxygen, right? And it is also called inhaled air. When we breathe in, then this air which we breathe in is called inhaled air. स्टूडेंट्स, जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर हमारे माउथ में, हमारे नोज़ के थ्रू हमारे विंड पाइप में जाती है, उस एयर को बोलते हैं इनहेल्ड एयर, राइट? और इस एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट होती है. सो दिस एयर इज़ रिच इन ऑक्सीजन. जो हम बाहर से एयर लेते हैं, ब्रीद इन के समय हम जो सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट होती है. सो हम इसको बोलते हैं दैट इज़ ऑक्सीजन रिच एयर. ओके, और व्हेन वी ब्रीद आउट, देन दिस एयर इज़ कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर. और जब हम सांस बाहर निकालते हैं, तो जिस एयर को हम बाहर निकालते हैं सांस के थ्रू, दैट एयर इज़ कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर, राइट? दिस इज़ द एक्सहेल्ड एयर and this is inhaled air, and contains a lot of carbon dioxide. It's a waste gas. Means the air which we breathe in, right? The air which we breathe in, जो हम अंदर लेते हैं सांस, that air is rich in oxygen, and the air which is breathed out, outside, जो हम बाहर निकालते हैं air, that air is called exhaled air, right? So inhaled air, the air which we breathe in, and the exhaled air which we breathe out. The inhaled air is rich in oxygen and the exhaled air is rich in carbon dioxide. जो हम सांस बाहर निकालते हैं स्टूडेंट्स, उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि हम अपनी बॉडी से सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके, पूरी बॉडी से सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके हम बाहर ब्रीद आउट, एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और बाहर की जितनी भी प्योर ऑक्सीजन रहती है वो सारी हम ले लेते हैं अंदर नोज़ के थ्रू इनहेल्ड एयर में. ओके, so inhaled air is rich in oxygen and exhaled air is rich in carbon dioxide. Now let's study deep breathing. What is deep breathing, students? This is deep breathing. Okay, so what is written here, let's read it. You all open page number 13 and read it. Deep breathing. Close your eyes for a while and take a few deep breaths. You will feel the contraction of diaphragm and expansion of lungs in your body. Students, whenever you deep breathe means गहरी सांसें लेना, like this. Okay, बहुत गहरी सांसें लेना, that is called deep breathing. So जब भी आप डीप ब्रीदिंग करते होंगे तो आपको ये फील होता होगा कि ये दिस इज़ आवर डायफ्राम. ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, एंड द लंग्स फैलते हैं. जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, एंड लंग्स आर एक्सपेंड. ओके, लंग्स फैलते हैं, एक्सपेंड होते हैं.
when at the time of deep breathing. Okay, so deep breathing is a process in which lungs expand and allow better distribution of air in all sections of the lungs. So deep breathing में क्या होता है कि lungs हमारा expand कर जाता है, फैल जाता है, and in each and every part of the lungs the air filled. Okay, the air goes in, oxygen rich air goes in each and every part of the lungs. Okay, there are innumerable ways in which you can relax yourself, but deep breathing is one of them, and deep breathing is the best. Means students, there are many ways by which we can relax ourselves, but deep breathing is a very good method, most effective of all. Deep breathing is very good and very effective method to relax ourselves. Okay, now what is written? Practicing deep breathing is very beneficial to relieve stress and fatigue. Students, when on that day I took your online class, I told you to do yoga like Anulom Vilom. So what is Anulom Vilom? Why I told you to do Anulom Vilom? Because of this, students, because Anulom Vilom is a breathing exercise, and in this exercise we deep breathe. हम गहरी सांस लेते हैं और गहरी सांस निकालते हैं बाहर इस एक्सरसाइज में, अनुलोम विलोम में, इस प्राणायाम में. सो दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि यू शुड डू अनुलोम विलोम और एनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सो डैट योर माइंड can be calm and relaxed and your whole day will go better. Okay, now let's start. Practicing deep breathing is very beneficial to relieve stress and fatigue. Breathing exercises are thus practiced to increase lung capacity and reduce tiredness. हमारे लंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है स्टूडेंट्स, बिकॉज with the help of breathing exercise our lungs more expand, so its capacity will be increased and our tiredness will be reduced, our tiredness will be decreased. हमारी थकान भी दूर होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज से. फर्स्ट इनहेल द एयर फिल्ड विद ऑक्सीजन. कैसे करते हैं? हाउ वी शुड डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज? वी शुड फर्स्टली इनहेल द एयर फिल्ड विद ऑक्सीजन. Firstly, the air which is rich in oxygen we should take in our body and hold your breath for about 10 to 15 seconds. After that 10 to 15 seconds we should stop. Okay, we should hold our breath and then slowly exhale all the air from the lungs, and after that very slowly we should breathe out all the air through our lungs. The air, now this air which we will exhale, this air will be rich in carbon dioxide. सबसे पहले हमें ऑक्सीजन रिच एयर लेनी चाहिए. अब अपनी सांस को 2 से 3 मिनट रोक देना चाहिए, 2 से 3 मिनट नहीं, 10 to 15 सेकेंड्स रोक देना चाहिए, एंड आफ्टर दैट एक्सहेल, बाहर की तरफ एक्सहेल कर देना चाहिए. राइट, सो ऑक्सीजन रिच एयर हम अंदर लेंगे और जो एयर हम बाहर निकालेंगे, द एयर विच वी विल एक्सहेल, दैट एयर विल बी रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. Okay, this simple exercise can tackle the problem of shortness of breath efficiently, and breathing exercises are very beneficial for breathing diseases, respiratory diseases, and it is very useful to expand the capacity of lung. It is very useful to decrease our tiredness. Okay students, so today we studied the respiratory system. Now on next turn we will start pollution. Thank you.